Hello, good morning. I'm Priyanka Rajpal. In this video, I'll be taking, there is one section in CBSE board's exam um, that is case-based questions. So I'll be taking chapter-wise case-based questions. हर chapter के case-based questions मैं इसमें डालूंगी. तो this is for class 10th के लिए है. तो पहला चैप्टर द फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स तो उसके केस बेस्ड क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, केस बेस्ड क्वेश्चंस इज बेसिकली केस स्टडी. उसमें क्या होता है कि देर 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 मे बी ए लॉन्ग टेक्स्ट होता है, बट क्वेश्चंस आर जनरली वेरी इजी. क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. सो इफ़ यू नो द चैप्टर कंसेप्चुअली, एवरीबडी विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस. So if you know you are thorough with the chapter, pause the video, try it yourself. आप खुद try करिए and then check your answers. ठीक है, जिनको नहीं पता है they try to understand the things. Now I'm going to read the question. A seminar is being conducted by an educational organization where participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. तो हिंदी का पार्टिसिपेंट 60 हैं, इंग्लिश में 84 हैं और मैथमेटिक्स में 108 है. In each room the same number of participants are to be seated. अब हर रूम में हमने सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को सीट करना. इन पार्टिसिपेंट्स को वी हैव टू डिवाइड इनटू नंबर ऑफ रूम्स and all of them being in the same subject. Find the maximum number of participants that can accommodate in each room. So when we have to divide the number of participants into the room, and the same subject participants will be sitting in one room, so obviously we have to look for a factor which will divide them. So look for HCF here in this A part. So the answer for the A part is going to be HCF of 60, 84 and 108. तो आप इसका HCF लेंगे. If you want to do by prime factorization, you do that. I'm going to do it with the long division. I'm sure ये HCF निकालना तो सबको आता होगा. So now for 84 and 108 the HCF is 12. Let us try 12 and 60 now, because ये factor उन दोनों का निकल गया. हाँ, it divides 62. So HCF is going to be here 12. So 12 answer to this question would be 12 participants of each subject in the room. What is the minimum number of rooms required? Now when you hear the word minimum, please don't go for LCM straight away. देखिए क्या कह रहा है वो, कि अगर आप 12 participants, if you place 12 participants in each room, so how many rooms are they going to occupy? All of them are कितना occupy करेंगे? How many rooms are they going to occupy? For B part, let us find out. English participants will take 84 number है, तो 84 by 12, because 12 we are placing in each room. Hindi participants will take उनका number 60 है, so 60 by 12, 5 rooms. Rooms and rooms. Number of rooms for English participants. Number of rooms for maths participants are going to be 108 by 12, because 12 in each room. So we are going to divide 9 rooms. So 5 plus 7 plus 9 is going to be the minimum number of room required.
21 rooms they are going to take. So what is the minimum number of rooms required during the event? That the answer is going to be 21 rooms. Next, find the LCM of 60, 84 and 108. Very easy question. You have to straight away go for LCM here. So please find it out on your own. No explanation required here. So the LCM is going to be 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 7. 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 7. 12 into 3, 36 into 3, 108. 108 into 5. So you find it out on your own, do the calculations, and you will get the answer. Write 108 as the product of primes. Product of primes, again, you have to do the prime factorization. So this was quite easy. This is the product of prime, that is 2 into 2 into 3 into 3. The 2 square into 3 cube is the product of prime here. दो बार 2 लिखा है and so I have written it as 2 square into 3 cube. So this is the answer for D part, C part. Now coming to next case study. A mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model for factor tree. अब बचपन से ये factor tree करते आ रहे हैं. This is quite easy. So I would like you to pause the video and try it on your own and then find out the answers for these 5 parts. They are very easy. Now, what will be the value of x here? What will be the value of x here? फैक्टर ट्री में आप क्या करते हैं कि इस x के 2 फैक्टर्स निकालते हैं. ये फैक्टर्स हम फिर फर्दर फैक्टराइज करते हैं. एक प्राइम फैक्टर होता है, दूसरा कॉम्पोजिट नंबर होता है. नाउ दिस x इज गोइंग टू बी व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ 5 and 2783. So x is going to be what? Product of 5 and 2783. जिनको फैक्टर ट्री नहीं आता, आई विल टेक ए स्मॉलर नंबर. आप 12 लीजिए. आप एक प्राइम फैक्टर लेते हैं और देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करके वो आ जाता है. एंड देन दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर. इसको फर्दर फैक्टराइज करिए, एक प्राइम नंबर, एंड बाय चांस दूसरा भी प्राइम नंबर आ गया. वी आर डन विद द फैक्टर ट्री नाउ. ये हमारे फैक्टर ट्री पूरा कंप्लीट हो गया बिकॉज दोनों लास्ट के दोनों में हमारे पास प्राइम नंबर आ गए हैं. तो x इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ, ये देखिए इसका प्रोडक्ट 12 है, तो 5 इंटू 2783, तो 5 3 15. So you multiply, you are going to get the x. Now y, what is going to be the y here? आप देख रहे हैं y इंटू 253. मैंने आपको कहा इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर वाला बॉक्स होगा. y इंटू 253 इज व्हाट? 2783. So what is going to be the value of y here? You just divide. आप डिवाइड कर दीजिए. तो आप जब डिवाइड करेंगे यू आर गोइंग टू गेट द आंसर हेयर. करिए. लेट अस टेक द do the division.
it is 11 here. So the value of y is going to be 11. Now what will be the value of z here? When you multiply 11 into z, you are going to get 253. And again, we are going to go with the same approach. 11 into z is equal to 253. So z की value क्या होगा? 253 divided by 11. That will come out to be 23. So the value of z is 23. z का value 23 होगा. Y का value is going to be 11 here. And x is 13915. So we are done with the three parts here. Let us understand D. What, according to fundamental theorem of arithmetic, 1395915 is a, look, fundamental theorem of arithmetic क्या कहती है कि आपका composite numbers can be expressed as unique product of prime. Emphasis is on composite numbers. आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं कहती, बस ये कहती है कि कॉम्पोजिट नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, बस उसे एक थ्योरम से स्टेट कर दिया गया है. सो 13915 इज ए कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज fundamental theorem of arithmetic is all about composite numbers, that every composite number can be expressed as unique product of prime. So composite number, the answer for D is going to be composite number. Now I have to give the prime factorization of 13915. Very simple. Do the prime factorization. 5 is going to be the factor. पहले उससे कर लेते हैं. Then 27813, ये हमने निकाल ही रखा है यहीं पे, द सेम 5 into 11 into 11 into 23. तो it is going to be 5 into 11 into 11 into 23. Okay, so the E part of the question has been done. This was case study 2. Let us switch to next case-based question. In a classroom activity on real numbers क्या होते हैं? Rational plus irrational numbers. The students have to pick a number card from a box and frame question on it. Is not a rational number for rest of the class. The number cards picked by 5 students and their questions are questions on the numbers for rest of the class are as shown. Akshay picked up root 12 and his question was, which of the following is true about root 12? Is it a natural number, an irrational number, rational number, none of the above? As you can see, root 12 को अगर मैं simplify करूँ तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 root 3, because this one pair में से एक 2 will be coming out of the square root. Now, this is the product of rational and irrational. Always product of rational and irrational is always going to give you an irrational number. आपको पता होना चाहिए ये रूट 3, रूट 5, रूट 2 जो प्राइम नंबर्स के रूट होते हैं, दे आर इरैशनल नंबर्स. तो दिस इज एन irrational number. Shalu picked up bonus and her question was, which of the following is not rational? इसमें irrational, कौन सा irrational नहीं है? मतलब कि आपको rational नंबर बताना है. कौन सा इसमें से irrational नहीं है? As you can see, इसको further simplify नहीं कर सकते. ये rational है और irrational, ये वाला part irrational है. Rational plus irrational number आपको irrational देगा. Rational minus irrational number भी आपको irrational देगा. तो ये irrational ही है. Again, difference of rational and irrational is going to be irrational number. ये भी irrational है. अब इसको further solve करेंगे.
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 2 + 2, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. सो आप इसे सॉल्व करिए. दिस विल कम आउट टू बी 8 विच इज ए रैशनल नंबर. स्ट्रेट अवे लेट्स जस्ट पिक दिस ऑप्शन कि ये इरेशनल नहीं है. फोर्थ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस was an MCQ question. तो ये irrational है. Given that one of the students pick up 1 by root 27, what will be the decimal representation of it? इसकी decimal representation क्या होगी? पहले तो simplify करके देख लेते हैं. रूट 27 को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 by root 27 को. इसमें से एक 3 बाहर किया, 1 by 3 root 3. And now just वैसे तो this is an irrational number, but if you want to further rationalize it, simplify करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा. Now this is an irrational number. If you know that decimal representation of irrational number, decimal representation of, this is exercise 1.4. अगर आपको पता है decimal representation of irrational number will always be, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, उसका डेसिमल कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, एंड नॉन रिपीटिंग. सॉल्व इट. रूट 2 रूट 3 को आप सॉल्व करिए, डेसिमल में लाइए तो आप देखेंगे दिस इज इन द फॉर्म कि वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, इट गोज ऑन. सो ऑलवेज इरैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. आई होप दिस इज क्लियर. कमिंग टू नेक्स्ट, देखिए इसके साथ साथ एक और बात भी बोल देते हैं. बार वाले जो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, दे आर रिकरिंग डेसिमल्स. ये रिकर हो रहे हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज रैशनल. ये हमेशा रैशनल होते हैं. ये क्या होते हैं? हमेशा रैशनल होते हैं बिकॉज वी कैन कन्वर्ट देम इनटू पी बाय क्यू फॉर्म. हम इन्हें पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस केस स्टडी में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, दिस मे बी द क्वेश्चन ऑल्सो. सो प्लीज कीप इट इन माइंड. Next question. HCF and LCM are widely used in numbers system, especially in real numbers, in finding relationship between different numbers and their general forms. The product of two positive integers is equal to the product of their HCF and LCM. Obviously, you have done the relationship. HCF into LCM is equal to product of two numbers जिनका लिया जाता है. तो HCF into LCM is equal to one number into other number. And here we have some typing mistake. X is equal to P square Q cube. Y is equal to P cube Q. Please note it down. X क्या है? P square Q cube है and Y is P cube Q. ठीक है. Now which of the following is true? Again a multiple choice कि आपका ये क्या true है इसमें. Before looking at the option, let me find out HCF and LCM. जब भी आपका इस फॉर्म में है तो कैन यू राइट दिस एज, ऐसा लिख सकते हैं. अब HCF is always going to be the common factors. और जिनको ऐसे नहीं करना है, प्लीज लुक कि आपका इसमें कॉमन फैक्टर इज P
आप क्या कर सकते हैं, p का सबसे छोटा पावर, यू कैन लुक फॉर दैट पावर, p का वो पावर विच इज द लीस्ट इन टू एक्सप्रेशंस, आप सीधा वो लिख दीजिए p स्क्वायर. q क्यूब एंड q, इसमें q is common in both and the least power is q raised to power 1. So HCF is p square q. And what is LCM? आप ये तो लिखते ही लिखते हैं, p square q तो लिखते लिखते हैं, बाकी बचे हुए expressions लिख देते हैं. q and q, two q's are there and into p. So can we say that this is HCF into q square p? HCF into q square p, क्योंकि ये आपका HCF था, this was your HCF. उसके अलावा हमने किससे मल्टीप्लाई किया, q स्क्वायर p. अदरवाइज अगर आपको इस तरह नहीं करना है, यू मे गो फॉर एलसीएम जस्ट लाइक दैट, कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, p है, एंड लुक फॉर द बिगर पावर. जैसे p स्क्वायर p क्यूब में बड़ी पावर क्या है, p क्यूब है. q क्यूब एंड q में बड़ा पावर क्या है, q क्यूब है. सो एलसीएम इज p क्यूब q क्यूब. सो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं. नाउ वी हैव गॉट आवर आंसर दैट LCM is HCF into q square p. LCM is HCF into q square p. B option is the correct option. Coming to next question. A boy with a collection of marbles realizes that if he makes a group of 5 or 6 marbles, there are always 2 marbles left. Then which can be correct value of p if the number of marbles is p? Now, 5 और 6 marbles लेता है तो ग्रुप बनाता है, ऐसे 5 marbles का ग्रुप बनाता है. कभी भी ग्रुप बनाता है तो always we are left with 2 marbles. अगर ग्रुपिंग 6 में भी करता है तो हमें तब भी 2 marbles बचते हैं. So clearly we are looking here for a multiple of 5 or 6. 5 और 6 का multiple ढूंढ रहे हैं हम लोग, और let us find out lowest multiple जो कि 2 marbles छोड़ देता है. 5 और let us find the LCM of 5 and 6 here. क्योंकि आप 5 और 6 के ग्रुप बना रहे हैं, ऐसे ग्रुप बनाते जा रहे हैं, और लास्ट में आप देखते हैं 2 मार्बल्स बच गए हैं. तो वी हैव टू क्लियरली लुक फॉर मल्टीपल ऑफ 5 and 6 here. So what is the multiple of 5 and 6, LCM of 5 and 6? It is going to be 30. लेकिन अब 30 को अगर 5 के ग्रुप में डिवाइड करो तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, बट दे ऑलवेज इन दिस केस 2 मार्बल्स आर लेफ्ट. 2 मार्बल्स बचे हुए हैं. सो आई एम गोइंग टू ऐड 2 here. So 32 is the required number. अगर हम लीस्ट देखें तो, नहीं तो अगर हम 30 के लीस्ट नंबर देखें तो 32 सबसे छोटा नंबर है, जो कि 5 के ग्रुपिंग में करें 2 छोड़ेगा, 6 के ग्रुपिंग में डालें तब भी 2 छोड़ेगा, 2 मार्बल्स छोड़ेगा. सो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ p कैन बी 32. ऐसे एक और वैल्यू ढूंढते हैं कि 30 का मल्टीपल क्या होता है, 60. 5 की ग्रुपिंग में भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 के ग्रुपिंग में भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. एंड इफ आई ऐड 2 लेफ्ट मार्बल्स, 62 हमेशा 5 के ग्रुपिंग में भी 2 छोड़ेगा, 6 के ग्रुपिंग में भी 2 छोड़ेगा. सो इफ यू सी, अगर मैं देखूं कि 30 का मल्टीपल प्लस 2 इज ऑलवेज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड आंसर. तो आप बेशक जनरल फॉर्म नहीं देखिए, यहीं से देखिए कि हमेशा इट हैज टू बी, p हैज टू बी एन इवन नंबर. उसे इवन नंबर होना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? फॉर दिस सिचुएशन टू बी ट्रू, p हैज टू बी इवन नंबर. कमिंग टू द थर्ड पार्ट, find the largest possible positive integer that will divide. Now we are looking for a factor जो कि हमेशा रिमाइंडर छोड़ेगा.
Clearly this is the case of HCF. हमको third part में I have to find out the third part में HCF ढूंढना है मैंने, but leaving remainder 7, 11 and 15. 398 अगर 7 माइनस करें, इट्स गोइंग टू बी 391. 436 में से 11 माइनस करें तो आपको पता है रिमाइंडर्स को माइनस करना पड़ेगा. 425 एंड 540 में से आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर 15, 527. Now I have to find for third to answer the third part, I have to find HCF of 391, 425 and 527. You can find it out by any method, but I find long division is quite less time consuming. So 420, I'm going to find the HCF by long division. Now let me find out the HCF of this of 17 and the left out number, that is 391. Clearly HCF of three numbers is 17. So 17 is the largest possible positive integer. 17 होगा जो इनको डिवाइड करके respective remainders छोड़ता है. Okay, now coming to the fourth part. Coming to the fourth part, find the least positive integer which on adding 1 is exactly divisible by 126 and 600. So I have to look for a number which is divisible by this. ठीक है, ऐसा नंबर जो जिसमें 1 ऐड करें तो वो डिविजिबल बाय 126 and 600 हो. ऐसा number which is divisible by 126 and 600 is going to be the LCM, that the multiple, lowest common multiple. So एक ऐसा number जिसमें 1 ऐड करें वो LCM बन जाए, I have to go for that. So clearly I am going to find the LCM of 126 and 600. Up. Please calculations you try on your own. So LCM is going to be 12600. So the number, I have to look for this number on adding 1 to that number. ये 12600 बन जाए. ऐसा number जिसमें 1 ऐड करें वो 12600 बन जाए. So the required number is going to be 1 उधर जाके क्या करें, subtract कर दें, 12599. So answer for this question is going to be 12599. Fifth part, A, B, C are three rational numbers such that, please read fifth part. A, B and C are three rational numbers such that 85C minus 340A is going to be 109. 425A plus 85B is going to be 146. Then by what number the sum of A, B and C का sum will be divisible by which number?
completely divisible by which number? So clearly I have to get the sum of A, B, C first, and then I am going to decide कि वो किस number से divisible है. Now in these questions people get confused. वो क्या करते हैं कि they try to find A, B, C. बट दिस इज़ ए ट्रिक क्वेश्चन. मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि ये ट्रिक क्वेश्चन है. आप क्या करिए, इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ नहीं निकालिए, आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करिए. यू विल रीच समवेयर, ट्रस्ट मी, आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे इसमें. यू ऐड देम, आप इन्हें ऐड करिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया. 85C plus it is going to be 85A plus 85B. मैंने आपको कहा था ये ट्रिक क्वेश्चन है. आप मतलब कि ऐड करेंगे, इनमें से अब 85 आप कॉमन ले सकते हैं. एंड क्लियरली वन हिंट इज दैट कि यू हैव टू फाइंड द सम. वो इंडिविजुअल वैल्यूज पूछ ही नहीं रहा, आपको सम पूछ रहा है, तो एक बार ऐड करके देख ही लीजिए. अब उधर क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे. इट इज 3. 85 आपने कॉमन ले लिया है, तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, C प्लस A प्लस B. सो आई हैव रिटन इट A प्लस B प्लस C. तो 85 उधर जाके डिवाइड करेंगे. A प्लस B प्लस C क्लियरली इज कमिंग आउट टू बी 3. वो 3 आ रहा है. आपका सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है. तो क्लियरली 3 का एक फैक्टर क्या है, 3 है. सो इट इज डिविजिबल बाय 3. I hope I am clear here. Thank you so much. Thank you.